Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm going to talk about Cell, the Unit of Life, Chapter 8 from your NCERT textbook. And I've already made few videos on this topic. In case you did not watch them, please watch those videos. I'll link it below. And many of my videos have kept it like organized in the playlist. So go to my channel, go to the playlist, and you can find the links for class 11, 12, and Neet separately. And also today I'm going to try and explain in Hindi because many of my students have requested me to explain it in Hindi. So I'll be doing it in Hindi and English. And just a disclaimer, I'm not pro in Hindi, so I'm just going to make it easy to understand. But I'm going to use most of the English words while trying to explain it. So today I'm going to mainly explain about cell and the scientists who discovered cell, nucleus, and so on. And what are the differences between prokaryotes, eukaryotes, and which are the smallest cells and which is the largest cell, and few neat questions based on that, and also about different kinds of cell, and a little bit in detail about prokaryote cell. So this is a very long chapter, so I'm going to divide it into 5 parts. So every day I'll be explaining a little bit. So in case you have any questions, you can always leave the questions in the comments and I'll get back to you. And I have my email link below, and you can join my Telegram channel as well as YouTube channel, and you can post your questions and I'll repeat whatever the explanation you want. I can do a live video and explain it. So let's get started. So first we are going to talk about what is a cell. So unicellular organisms are capable of independent existence. So before I start, this is the chapter from NCERT textbook. So you can keep your NCERT textbook open or just have a plain white book and go along with me. So what are they trying to tell here is cell is mainly the important, basic, and fundamental unit of life. We all know, we have been studying this in school, right? So there are two kinds of organisms. One is unicellular organism and second one is multicellular organisms. Okay. The reason I'm explaining it in English is because at the end, Neet is going to, you're going to answer your questions in English, but I'll also explain it in Hindi. So unicellular organisms and multicellular organisms, there are two types. So organisms दो तरीके के होते हैं, एक है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब एक सेल सब कुछ करता है. मतलब अगर ये अमीबा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है अमीबा? इट्स गेटिंग इट्स न्यूट्रिशन, जो खाना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन वन सेल. तो अमीबा में क्या हो रहा है? सारे फंक्शंस, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, थिंकिंग, excretion, and then division, reproduction, everything is done by one cell. That is why it is called uni, means single cellular organisms. Okay, now we come to multicellular organisms. Multicellular organisms मतलब humans. जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं नोज से, खाते हैं माउथ से, राइट? हम में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. तो इससे पहले मैं कंटिन्यू करूं, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिकैप. सेल्स सब मिलके बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके होते हैं ऑर्गन सिस्टम्स. ठीक है, तो हमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स रहते हैं, राइट? तो यहाँ तक क्लियर है. ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली इन लोगों ने शुरू किया, इसीलिए मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा ब्रश अप दे रही हूँ. तो अभी ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ कर सकते हैं, इसीलिए इट इज कॉल्ड, इट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, राइट? सेल के बिना कुछ नहीं. मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी वो एक सेल तो जरूरी है ताकि वो सारी चीजें कर सके. तो इसका मतलब सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, नेक्स्ट, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. इन्होंने क्या देखा? इन्होंने फर्स्ट लाइव सेल देखा. जो लिविंग सेल है
जिसने देखा उस साइंटिस्ट का नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? We all know the parts of the cell. I have explained it multiple times and I'll link it so that you have an idea. We know that inside the cell, the nucleus is the control center where your genetic material is present, that is chromosomes. Nucleus cell के बीचों बीच में होता है जिसमें genetic information stored होती है। वहां पे वो decide करते हैं कि कौन से genetic factors एक generation से दूसरे generation पे transfer हो सके। Okay, so if you see any similarities between your mother and you, that's because there is similar genes in both of you, right? And that all is happening inside the nucleus. Okay, and who discovered this nucleus? It was discovered by Robert Brown. Okay, so here two scientists के नाम दिए हुए हैं NCERT के first page में cell topic पे। वो है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक first discovered the living cell and फिर Robert Brown discovered the nucleus. Now coming to cell theory, Schilden, a German botanist, examined a large number of plants. So अभी Schilden ने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे plants को observe किया है and that he came to a conclusion that plants are composed of different kinds of cells which form tissues of the plants. So Schilden, what did he do? He made his own study on plants. Okay, and what did he say? Many cells come together and form tissues. At about the same time, Theodore Scand, now there is another scientist called Scand, reported that cells have an outer layer which is called as plasma membrane. Okay, तो स्कैन ने क्या बोला कि हर एक सेल के बाहर एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शील्डन ने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, उन्होंने बोला कि सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं। वैसे स्कैन ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि सेल्स के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये देखता है क्या चीजें सेल के अंदर आए और कौन सी चीजें सेल के बाहर जाए। मतलब बेसिकली इट्स कंट्रोलिंग व्हाट एंटर्स द सेल एंड गेट्स आउट ऑफ द सेल. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. और इन्होंने सिर्फ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही नहीं बोला, इन्होंने बोला है कि सेल वॉल एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल है जो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है. Main thing, if you see a cell wall, that's a plant, right? So that was done by Scand. Scand proposed this theory. So on basis of this, अब तक Scand और Schilden ने जो कुछ theories बनाए, उसके basis पे एक और scientist Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. और अभी श्वान ने क्या बोला? श्वान ने प्रपोज किया हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. तो चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, दे आर हैविंग cells. Let it be plant, plant also has cells, animals, animals also have cells. Schilden and Schwann together formulated cell theory. Cell theory 10th class में भी important question था, और अभी in general 11th also you get, like, not just in Neet, but normally this is an important question. So what does this theory say? They formulated a theory saying that cells come from pre-existing cells, but they did not tell it how. इन लोगों ने बोला कि सेल जो है, अगर एक छोटी सी सेल है, वो सेल आता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? मतलब जैसे कि हम आते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, राइट? बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन इट ऑन व्हाट बेसिस डिड दे रियली come to that conclusions. So who is the one who properly explained this theory is Rudolf Virchow. First explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. He modified the hypothesis of Schilden and Schwann to give cell theory a final shape. So this cell theory which we understand right now is by Rudolf Virchow. Okay, उन लोगों ने बोला कि all living organisms are composed of cells and products of cells. All cells arise from pre-existing cells. Now, later, there are different zoologists and botanists who conducted their studies on different plants and animals. We'll be studying about it later.
So here, you'll understand this slide better when I explain about animal kingdom, but I've put this slide specifically here so that you know that prokaryote comes under category Monera and eukaryote under Protista. Why am I explaining this? You'll come to know when I explain the next slide. Okay. So basically, this cell, before you start reading this, there are different kinds of organelles, right? So basically, the difference between eukaryotes and prokaryotes, what is it? So pro means primitive hota hai, or karyon means nucleus hota hai. So prokaryotes means primitive nucleus, okay? And eukaryotes are the organisms which have well-developed nucleus, okay? So eukaryotes में organelles होते हैं. So prokaryotes are nothing but they have primitive nucleus, okay? And here well-developed, well-defined nucleus can be seen, okay? Then we have lot of organelles over here, like endoplasmic reticulum, plasma membrane, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, vacuoles, lysozymes, and microbodies, as well as you have different centrosome and different organelles. But prokaryotes is primitive, and it has 70 S ribosome, prokaryotes, and eukaryotes have 80 S ribosomes, okay? So another thing, primitive nucleus means, does prokaryotes have genetic material? Because चाहे वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो या फुली डेवलप न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस का हमने पढ़ा है कि मेन फंक्शन ये होता है कि उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है. तो उन लोगों में डीएनए होता है कि नहीं होता है? तो they do have a DNA, they have a circular DNA, and that is called as plasmid. The DNA is called as plasmid, and it's a circular DNA with one chromosome, okay? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, एल्गे, फंगाई, पीपीएलओ, वो सब प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं. तो अभी राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो लेट अस रीड अगेन. So there are different kinds of organelles in eukaryotes, like endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, it is mainly, you can see such structures. These are endoplasmic reticulum. They might have spikes of proteins. They are called as ribosomes. They are mainly for transport. So this is smooth endoplasmic reticulum and this is rough endoplasmic reticulum. ठीक है. और सेल के अंदर ये सारे चीजें होती है, और सेल का कवरिंग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो देखता है कि क्या चीजें आए और क्या चीजें बाहर जाए. तो who is behind this? That is plasma membrane. And then you have rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. And what does ribosomes do? They help in protein synthesis. Next we have Golgi complex. ये Golgi complex क्या करता है? जैसे कि, it's just an example, जैसे कि Amazon delivers packages from one place to another place, right? Similarly, Golgi complex, what does it do? It does is, ये ट्रांसफर करता है एक सेल से दूसरे सेल पे. अगर उस सेल को कुछ और चाहिए तो ये जाके गोल्गी कॉम्प्लेक्स जाके ये एक सेल से दूसरे सेल तक जाता है, और वहां से इधर कुछ लेके आना है तो वो करता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट, mitochondria. Mitochondria is important because it is called powerhouse of the cell, which we'll study later. Then we have lysosomes. Lysosomes are also called as suicidal cells. ये क्या होता है कि ये सेल्फ अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ठीक है. माइक्रोबॉडीज मतलब छोटी छोटी चीजें होती है, और वैक्यूल्स मतलब मेनली फॉर स्टोरेज. सो वैक्यूल्स इज फॉर स्टोरेज. एंड mitochondria is also called as powerhouse of the cell because this is where ATP is synthesized, which gives us energy to do work. Okay. Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic and prokaryotes. तो दोनों में ribosomes होते हैं, और important thing ये होती है कि दोनों में कोई भी उसका surrounding कोई membrane नहीं होता है. ठीक है. Next is chloroplast. Chloroplast is green colored pigment that's only seen in plant. It's absent in animal. Animal cells contain another non-membrane bound organelle called as centrosome. Centrosome, ऐसे आप अभी के लिए ऐसे sun type structure याद रखो.
ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको 9+2 स्ट्रक्चर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच में 2, तो 9+2 स्ट्रक्चर याद रखो। दे हैव समथिंग कॉल्ड सेंट्रोसोम दैट हेल्प्स इन सेल डिविजन। एक सेल अगर दो सेल में बनना है तो कौन हेल्प करता है, सेंट्रोसोम हेल्प करते हैं। तो cells vary greatly in shape and size. So now we are going to study which are the smallest cells and which are the largest cell. Okay. Okay. So now the smallest cell is mycoplasma. It is 0.3 micrometer in length. Okay. Whereas bacteria is 0.3, 0.4 to 0.5. Largest is ostrich egg. Ostrich egg is a single cell. So which is the smallest cell? It is mycoplasma. And which is the largest cell? Ostrich egg. तो सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा, जो 0.3 माइक्रोमीटर में होती है। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच एग होती है। ठीक है, तो these are different kinds of cells: RBCs, white blood cells, columnar epithelial cells, nerve cells, tracheate and mesophyll cells seen in the plants. These are in the plants and the other 4 are in animals. You can see that the shape is very different. The structure is very different. Now this is just summary of what we studied. Prokaryotes come under the category of Monera. Eukaryotes come under the category of Protista. Prokaryotes are non-membrane bound nucleus, and in eukaryotes you have very much well-developed nucleus. Nuclear membrane is present. Different organelles: endoplasmic reticulum, mitochondria, lysozymes, vacuoles, Golgi complex, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, plasma membrane, and centrosome, which helps in cell division, is present. Both the ribosomes are present in both prokaryotes and eukaryotes, and in prokaryotes आपको non-membrane bound ribosomes होते हैं और eukaryotes में भी non-membrane bound ribosomes होते हैं। यहाँ पे 70S ribosomes होते हैं और यहाँ पे 80S ribosomes होते हैं। ठीक है, तो prokaryotes कौन से kingdom classification में आते हैं, मोनेरा। eukaryotes प्रोटिस्टा में आते हैं और prokaryotes में primitive nucleus होती है, eukaryotes में well defined nucleus along with organelles and centrosomes होते हैं, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में ही नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होती है, और प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होती है और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होती है। नाउ सो mycoplasma is the smallest cell, 0.3 micrometer, and largest cell is ostrich egg. ठीक है, ये याद रखना। Now we have studied basically the difference. This is again just the repetition. Here we can see mycoplasma is the smallest cell, that is 0.3 micrometer in length. Next is bacteria, 3 to 5 micrometer, and largest cell is the egg of ostrich. And human RBC cells are 7.0 micrometer in diameter. Nerve cells are also longest. तो cells के shape spherical हो सकते हैं, cuboidal हो सकते हैं, columnar हो सकते हैं और columnar ciliated हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से सेल का शेप डिफर करता है। ओके, prokaryotic cells. Prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and pleuropneumonia-like organisms. ये बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए एकदम जल्दी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, because they are very small, they can divide very easily. So bacteria is a type of prokaryotic cell, algae is type of a prokaryotic cell, mycoplasma fungi is a type of prokaryotic cell, और PPLO भी prokaryotic cells होते हैं। और ये छोटे हैं इसीलिए जल्दी डिवाइड होते हैं। शेप्स डिफर करते हैं, रॉड लाइक हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, कॉमा शेप्ड हो सकता है और स्पाइरल शेप्ड हो सकता है। रॉड शेप्ड है तो बैक्टीरिया है। So these all are the shapes of bacteria only I'm saying. And rod-shaped bacteria example is Bacillus, and coccus is spherical. Vibrio, that causes the causative organism of cholera is Vibrio cholera. So I remember comma, so it causes cholera and it is caused by Vibrio cholerae. Spiral, so it's easy to remember Spirilium. So that's how I remember different bacterial names.
Okay. So Bacillus, Coccus, Vibrio, and Spirillum. So 4 different types. Now, all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. So सारे में बैक्टीरिया में सेल वॉल है, एल्गे में है, पीपीएलओ में है. All prokaryotes except mycoplasma. So mycoplasma does not have a cell wall. ठीक है. प्रोकैरियोट्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. जेनेटिक मटेरियल के बारे में भी मैंने बोला था कि सर्कुलर डीएनए विद वन सिंगल क्रोमोसोम दिखता है, वन सिंगल क्रोमोसोम दिखता है. तो ये सर्कुलर डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स देने की कोशिश करें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो द रेसिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स इज डन बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड. ओके. So, yeah, the plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. You will learn about this later. ठीक है. तो यहाँ तक that we have studied, we have covered. So tomorrow I'll continue with eukaryotic cells. So just let's have a quick recap. So I told you that there are two kinds of cells. Unicellular cells होते हैं, multicellular cells होते हैं. Unicellular cell में एक सेल सब कुछ करता है, तो सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सेल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. ठीक है. और जिसने डिस्कवर किया लिविंग सेल को, वो साइंटिस्ट का नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. और न्यूक्लियस जिसने डिस्कवर किया उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन. फिर शील्डन ने प्लांट पे ये देखा कि ही डिड लॉट ऑफ वर्क ऑन प्लांट्स एंड देन डिस्कवर्ड दैट सेल्स बनते हैं टिश्यूज में. और स्टैंड ने भी कुछ देखा है कि सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कंट्रोल करता है क्या चीजें अंदर है और क्या चीजें बाहर है. और इस बेसिस पे श्वान ने एक सेल थ्योरी बनाई है. और उन्होंने बोला कि सेल्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, इट्स कमिंग बट because of the already existing cells, but there is no clarity on how. And Rudolf Virchow is the one who has given the cell theory a final shape. और उन्होंने बोला कि सारे living organisms are composed of cells and products of cells and they come from pre-existing cells. ठीक है. और हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस. प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इसीलिए उसको प्रो मींस प्रिमिटिव, न्यूक्लियस मींस कैरियन बोलते हैं. यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में राइबोसोम्स होते हैं, और दोनों में राइबोसोम्स पे और कुछ और मेम्ब्रेन नहीं होता है. और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस में there is genetic material, there's one single chromosome, and there is circular DNA called plasmid. And there is a typical character that in bacteria, what do you see is there is a resistance to antibiotics because of plasmids. Eukaryotes में सारे organelles के बारे में मैंने already explain किया. Please do check out my other video, or you can play the video from the beginning so that you'll understand it better. So there are different kinds of cells, as you can see on the screen. This is trachea, then this is mesophyll. So about each and every cell, I'll be explaining in detail in my upcoming videos. But now remember that there are different sizes, different shapes, and shapes differ based on the type of function they perform. जो function वो perform करने वाले हैं उसके हिसाब से इसके shapes बनते हैं. ठीक है. और हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, और सबसे लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग. ठीक है. और फिर bacteria, algae, mycoplasma, PPLO, they are the types of prokaryotes. And then like mycoplasma does not have cell wall, all the other three have cell wall. Types of bacteria: rod shaped, coccus, comma shaped, and spiral. Rod shaped is called bacillus, circular shaped is called coccus, and comma shaped is called example is vibrio, and spiral is spirillum. Okay, and I've told you the plasmid is the genetic material, it is the nucleus, and it has one single chromosomes. So till here we have studied, and अगर आप लोगों को समझ में आए तो please do like, share, and subscribe my video. And if you have any questions, आप मुझे comments पे you can leave your question, and मैं आप जरूर answer करूँगी. And if you want a PDF version, please let me know so that I can send it to you guys. And in case you have understood my video, please do like, share, and subscribe. And thanks for watching. And stay tuned to my channel. Thank you.